Hello students, welcome on my video. In previous lecture, we discussed how to convert exclusive classes to inclusive classes and inclusive classes to exclusive classes. I hope you all are understood. So now today we are going on a new topic, how to convert mid value to exclusive and mid value to inclusive classes. So whenever in the question given only mid value and ask find the exclusive classes अदरवाइज इंक्लूसिव क्लासेस, तो एट दैट टाइम अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पूरी प्रोसेस मैंने नोट डाउन किए बोर्ड पे. अगर आपके पास क्वेश्चन में मिड वैल्यू है और आपको ऐसा बोला है कि आप फाइंड करो एक्सक्लूसिव क्लासेस अदरवाइज इंक्लूसिव क्लासेस फाइंड करो, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है. क्लियर. अब ये एक बात जो आपके माइंड में रखना स्टूडेंट्स, कभी भी मिड वैल्यू में से हम लोग डायरेक्टली इंक्लूसिव क्लासेस फाइंड नहीं कर सकते. नेवर फाइंड द डायरेक्टली इंक्लूसिव क्लासेस. सो उसके लिए हमें यह करना पड़ेगा, सबसे पहले मिड वैल्यू जो हमारा क्वेश्चन है वो उसमें से हमें सबसे पहले एक्सक्लूसिव फाइंड करना होगा, देन एक्सक्लूसिव में से इंक्लूसिव में हमें कन्वर्ट करना होगा. क्लियर. डायरेक्ट हम लोग यहाँ मिड वैल्यू से इंक्लूसिव पे जंप नहीं कर सकते कभी भी. क्लियर. सो अब मिड वैल्यू में से एक्सक्लूसिव क्लासेस कैसे फाइंड करें, सो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के थ्रू. अब व्हाट इज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, सो हियर ऑलरेडी गिवन फॉर्मूला फॉर द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. सो लोअर लिमिट इज इक्वल टू मिड वैल्यू जो हमारी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा वो मिड वैल्यू माइनस 1/2 c. c means class length. Understood students? c class length is also denoted by c. And how to find upper limit? So upper limit is equal to mid value plus 1/2 c means class length. Means here both formulas similar, minor different है ये दोनों में. लोअर लिमिट में क्या होगा, यहाँ पे माइनस और अपर लिमिट में यहाँ पे प्लस, बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी दोनों फॉर्मूला क्या आपके लिए सेम है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. देन हाउ टू कन्वर्ट एक्सक्लूसिव टू इंक्लूसिव, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया ही है, तो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि एक्सक्लूसिव क्लास होगा उसको एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव में कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो लोअर लिमिट में प्लस 0.5 करना है और अपर लिमिट में माइनस 0.5 करना है. ओके स्टूडेंट्स. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड this chain. Okay, so please note down this chain in your notebook and this both formula in your notebook and let me understood by example. Okay students, find the exclusive classes. यहाँ पे हमें डायरेक्ट बोल दिया है कि फाइंड द एक्सक्लूसिव क्लासेस. अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है और ओनली ऐसा ही बोला है कि फाइंड द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सो एट दैट टाइम वी ऑल्सो फाइंड द एक्सक्लूसिव क्लासेस. ओके. कभी भी कुछ मेंशन नहीं किया है और आपको ओनली मिड वैल्यूज एंड क्लास लेंथ दे दिए, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि आपको डायरेक्टली एक्सक्लूसिव क्लासेस ही फाइंड करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. ओके. सो फर्स्ट चेन हमारी थी जो मैंने अभी आपको मेंशन किया, वो क्या थी, मिड वैल्यू टू एक्सक्लूसिव एंड हाउ टू कन्वर्ट मिड वैल्यू टू एक्सक्लूसिव क्लासेस. सो नाउ वी हैव टू फॉर्मूला फॉर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. हियर ऑलरेडी वी मेंशन इट. Lower limit is equal to mid value minus 1/2 class length. Upper limit is equal to mid value plus 1/2 class length. Clear. And in this sum already we have mid value column, frequency column and class length column. Okay. So here we directly find out the exclusive classes. So one by one we put the values in lower limit and upper limit formula. Clear. So first फॉर द फर्स्ट क्लास, अब हम लोग फर्स्ट क्लास फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट क्लास के लिए मिड वैल्यू कौन से स्टूडेंट्स, 25 एंड क्लास लेंथ इज 50. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास. सो मिड वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास इज 25 माइनस 1/2. व्हाट इज द क्लास लेंथ फॉर फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, 50 ऑलरेडी गिवन. ओके गुड. देन अब इसका क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई फॉर्म करेंगे. सो 25 minus 50 multiplied by 1 divided by 2, so answer is also 25. So final answer is lower limit is 0 for the first class, so here we mention it. Then find the upper limit. So for the first class upper limit अब हम फाइंड करनी है, तो मिड वैल्यू क्या है, अगेन सिमिलर 25 प्लस 1/2 क्लास लेंथ इज सिमिलर फॉर द फर्स्ट क्लास 50. सो अगेन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म करेंगे हम लोग. सो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर इज 25 सिमिलर. सो 25 प्लस 25 स्टूडेंट्स 50 फाइंड आउट. सो फर्स्ट क्लास कौन सा होगा हमारा,
0 to 50. Understood students how to find upper limit and lower limit students? Okay, good. So please note down this sum with me. Okay, so here we erase it. अब हम लोग सेकेंड क्लास की फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स. सो फॉर द सेकेंड क्लास what is the mid value? 105. And what is the class length for second class? 110. So first of all we find the lower limit of second class. Mid value is 105 minus 1 upon 2. What is the class length for second class? 110. Understood? Then 105 minus 110 multiplied by 1 divided by 2. So answer is 55. That means lower limit of second class is 50. Understood? So lower limit of second class is 50. Now we find out the upper limit of second class. So what is the mid value for second class? 105 plus 1 upon 2. Class length for second class 110. So 105 plus 55 is equal to 160 upper limit. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? कैसे आए ये 160 सेकेंड क्लास? आपको मैंने क्या बोला कि दोनों फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स सिमिलर है और उसकी वैल्यू भी क्या होगी? सिमिलर होगी. बट चेंजेस क्या होगा कि यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे प्लस होगा. बाकी रिमेनिंग जो जितनी भी वैल्यूज है वो रिमेनिंग सेम होगी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो प्लीज नोट डाउन सेकेंड क्लास कैलकुलेशन. ओके, सो नाउ वी फाइंड आउट दिस थर्ड क्लास. So for the third class, mid value is 230 and class length is 140. So again we mention it. Mid value is 230 minus 1 upon 2. What is the class length? 140. Clear? So 230 minus 140 multiplied by 1 divided by 2. So answer is 70, means 160. Clear? So lower limit of second class is 160 minus upper limit, again same values, 230 plus 1 upon 2, class length is 140, already given in the sum. Clear? So 230 plus 70, that means upper limit of third class is 300. Understood students? Good. Clear? Now we find the fourth class. What is the mid value for fourth class? Is 400 and class length is 200. So 400 minus 1 upon 2. What is the class length? 200. Then 400 minus 200 multiplied by 1 divided by 2. So answer is 100. So final answer is lower limit is 300, and similarly here 400 plus 1 upon 2, class length is 200. So 400 plus 100, that means upper limit of fourth class is 500. So our fourth class is 300 to 500. Understood students? Okay. Similarly in fifth class, mid value is 650 minus 1 upon 2. What is the class name for fifth class? 300. So 650 minus 300 multiplied by 1 divided by 2. So answer is 150. That means 500. Lower limit of fifth class is 500. Okay students? Minus mid value 650 same plus 1 upon 2, class length is also same 300. So 650 plus 150, that means upper limit of fifth class is 800. Okay students? Good. So 800. Clear? Now we find out the last class of these frequencies. Mid value is 900 and class length is 200. So 900 minus 1 upon 2, class length is 200. So 900 minus
100. Why? Because 200 multiplied by 1 divided by 2. So answer is 100. So final answer is 800. So here also mention it 800. Okay students. Then 900 plus 1 upon 2, 200. Okay students. So 900 plus 100, that means 1000. Clear students? 1000. So I hope you all are understood how to calculate and how to find the exclusive classes on the basis of mid value and class length. Okay students, so please note down this sum in your notebook and also show calculation for this sum. Okay students. Students, here third example is find the inclusive classes. अब यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इंक्लूसिव क्लासेस फाइंड करना है, बट नाउ वी हैव ओनली 2 कॉलम्स, मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी इन दिस सम. अब यहाँ पे हमें क्या है कि क्लास लेंथ का कोई भी कॉलम नहीं दिया है, और हमारे फॉर्मूला में तो क्या है स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट हो तो लोअर लिमिट इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 क्लास लेंथ. अब क्लास लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, और मिड वैल्यू है और मिड वैल्यू के ऊपर से हमें क्या करना है, फाइंड इंक्लूसिव क्लासेस. तो हम लोग डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक्सक्लूसिव क्लासेस फाइंड करने, देन उसके बेस के ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूसिव क्लासेस फाइंड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड the exclusive classes. So for the find the exclusive classes, first of all we require the class length. So first we prepare class length, C column. So जब भी आपको स्टूडेंट्स क्लास लेंथ का कॉलम नहीं दिया है क्वेश्चन में, प्रीवियस सम ने हमने देखा था कि हमें मिड वैल्यू और क्लास लेंथ दोनों दे दिया था, तो हमने डायरेक्ट पुट डाउन करके वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था. बट इन दिस सम वी हैवंट क्लास लेंथ कॉलम. सो अब हमें क्या करना है कि क्लास लेंथ नहीं होती है, तब हमें देखना है कि ये जो मिड वैल्यूज है ना स्टूडेंट्स, उनके बिटवीन का गैप कितना कितना है. व्हाट इज द गैप बिटवीन द 2 मिड वैल्यूज. सो 21.5 माइनस 11.5 करो, 10 होगा. देन सिमिलरली 31.5 माइनस 21.5 अगेन 10, 41.5 माइनस 31.5 अगेन 10, एंड 51.5 माइनस 41.5 अगेन 10. दैट मीन्स ईच एंड एवरी क्लास की क्लास लेंथ क्या है, सिमिलर है, और क्या है 10. सिमिलर तो है बट क्लास लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी क्लास की क्लास लेंथ 10 है. अंडरस्टूड. ये हमारे पास हो गया. जब आपको क्लास लेंथ का कॉलम नहीं दिया है तब आपको देखना है कि मिड वैल्यू के बिटवीन की गैप कितनी है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो उसके बेस के ऊपर से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द क्लास लेंथ फॉर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास. ओके, सो नाउ वी फाइंड आउट द एक्सक्लूसिव क्लासेस. सो हाउ टू फाइंड एक्सक्लूसिव क्लासेस, मैंने आपको पहले प्रोसेस नोट डाउन करवा दी है स्टूडेंट्स. सो देखो उसमें कैसे करना है हमें. सो वी रिक्वायर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, एंड हियर ऑल्सो वी मेंशन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला मेंशन कर दिया है. सो लेट वी फाइंड एक्सक्लूसिव क्लासेस. सो फॉर द फर्स्ट क्लास 11.5 मिड वैल्यू एंड क्लास लेंथ इज 10. सो मिड वैल्यू इज 11.5 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 10. हम लोग ओनली फर्स्ट क्लास का ही मैं आपको कैलकुलेशन शो करूंगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर देंगे. वाई? बिकॉज मैंने प्रीवियस सम में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका इसका पूरा कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे. सो डायरेक्टली फर्स्ट क्लास का मैं आपको शो कर देता हूँ. सो 10 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2. सो आंसर इज 5. दैट मीन्स फर्स्ट क्लास इज 6.5. फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, 6.5. देन फॉर द सेकेंड क्लास मिड वैल्यू इज 11.5 प्लस 1 अपॉन 2. क्लास लेंथ इज सिमिलर 10. दैट मीन्स 11.5 प्लस 5 मीन्स 16.5. क्लियर. सो सेकेंड क्लास क्या होगा, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या होगी, 16.5. क्लियर स्टूडेंट्स. देन फॉर द सेकेंड क्लास सिमिलरली हम लोग कर देंगे ऐसे ही डायरेक्टली.
मिड वैल्यू क्या स्टूडेंट्स सेकंड क्लास की 21.5 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट मीन्स 21.5 माइनस 5 मीन्स 16.5. सेकंड क्लास की लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स 16.5 माइनस 2 अगेन सिमिलर 21.5 माइनस 1/2 क्लास लेंथ इज 6 so 21.5 plus sorry and 5 so 26.5 clear so here 26.5 here अब हमें देखना है कि क्लास लेंथ सबके इक्वल है 10 तो हम लोग इसके भी इसके ऊपर से ये पूरा एक्सक्लूसिव क्लासेस फाइंड कर लेंगे डायरेक्टली। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कैलकुलेशन थ्रू भी ये पूरा क्लास फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स सो 36.5 देन 36.5 46.5 then 46.5 to 56.5 ये हमारा क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ये एक्सक्लूसिव क्लास हमने फाइंड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। ओके सो नाउ वी फाइंड आउट इंक्लूसिव क्लासेस। सो for the inclusive classes we required shortcut trick inclusive class. So what is the shortcut trick for inclusive classes? So lower limit में हमें क्या करना है लोअर लिमिट में प्लस 0.5 एंड अपर लिमिट में माइनस 0.5 दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट क्लास 6.5 प्लस 0.5 that means 7 to 16.5 that means upper limit. so upper limit में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स माइनस 0.5 so क्या होगा 16 अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सिमिलरली इन सेकेंड क्लास लोअर लिमिट that means plus 0.5 17 and 26.5 so upper limit means minus 0.5 so 26 understood students। then for the third class 26.5 lower limit that means plus 0.5 so 27 and 36.5 upper limit means minus 0.5 means 36 clear। then similarly in 27 why because 0.5 plus and 46.5 minus 0.5 means 46 and 46.5 plus 0.5 so 47 to 56.5 that means upper limit minus 0.5 so 56. so students got it how to find mid value to inclusive classes. I hope you all are understood how to find mid value to exclusive classes and how to find mid value to inclusive classes. If you have any doubt so please comment on this video. Thank you.